Hey there everyone, I'm Shivani and welcome back to my channel. So first of all, a very happy new year to all of you. Today is literally the 1st January 2022 and I am shooting this video. So talking about this whole magical time, it is undoubtedly my favorite time of the year because I love new beginnings. So the whole idea कि हम फिर से सब कुछ scratch से start कर सकते हैं, figure out कर सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, and we can just sort of like take a pause, reflect on the past year, see what worked out, what didn't, and then take like new steps, figure out new goals and work towards it. So absolutely love it. So here I have like my journal for 2021. I have written down all my goals. Super excited for this. Let's go. So health, taking as the first category, the first goal for 2022 is to work out more. Now I know again बहुत generic है, ज़्यादा workout करूँगी. How do you track it? So talking about the how of this goal, what I've seen, what I've tracked in 2022, मैंने 30 दिन के कुछ लाइक गोल्स बनाए थे कि मैं हर दिन वर्कआउट करूँगी. तो ओवरऑल मैंने शायद 25-30 दिन ऐसे प्रॉपरली किए जहाँ पे मैंने वर्कआउट किया. उस चीज़ को बढ़ा के what I've done is that 2022 में they're going to be 52 weeks. So I want to work once every week. सुनने में लगता है कि हाँ 7 दिन में एक ही बार तो वर्कआउट करना है, आराम से हो जाएगा. पर जब आप छोड़ देते हो ना चीज़ें और आप रिफ्लेक्ट करते हो, आपको रियलाइज होता है अरे 3 महीने हो गए हमने तो वर्कआउट ही नहीं किया. सेकंड गोल इज़ टू मेडिटेट मोर. नाउ मेडिटेशन इज़ समथिंग जो I realize it's important because physical health आपकी ज़रूरी है कि आप उसका ध्यान रखो, उसको maintain करो. But it's very important that what's going in here. And अगर आपका mental stability है, अगर आप अच्छा सोच पा रहे हो तो everything else will also be pretty sorted. So again thinking on those lines, मैंने जब track किया 2021 में I meditated like 10-15 times in the whole year. And but this year again I am pushing myself a bit more because मुझे पता है ये वाला मेरे लिए मुश्किल होने वाला है. So I am gonna try to meditate once every week, which is again like 52 times a year is how much I will try to meditate, and I will then track it weekly and on a monthly basis. Talking about the third goal is I want to journal more. I know journaling is not really into like a health category, but for me health, as I said, is about not just physical health but about mental, and I think journaling literally helps me a lot in calming down and making sense of things, taking better decisions. So when I talk about journaling more, again, I generally like I journal for like 60-70 times a year. 4 or 5 days में journal कर ही लेती हूँ. And when I'm going on trips, because my journal is pretty heavy, तो उसको कहीं लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस बीच ज़रा छूट जाता है. जैसे मैं अभी ट्रिप से आई हूँ, 10 दिन से मैंने journal नहीं किया है, so वो छोड़ के I think every 6th or every 7th I'm able to do it. I want to up that and I want to journal like every 4 or 5 days, which is like I want to journal like 90 or 120 times this year. Fourth goal of 2022. So this one is a bit no, I think very difficult. So last year मैंने सोचा था कि मैं headstand और split करूँगी, but that was like my last year goal. I could not complete it. तो इससे मैंने सोचा वो मैं continue करूँगी, but I would not mark it as like separate goals. So ये दोनों पिछले साल से आए हैं. एक और मैंने इस साल जो ऐड किया वो ये कि I want to get abs. I know सुनने में again बहुत मुश्किल लगता है. I'm a bit scared. I don't know how will this work out, but you know I really want it to happen. मुझे बहुत cool लगता है. And I also think कि इसके बहाने like I mean reaching there is I think 100% maybe happen not happen, but while that journey I will just start eating a lot of like better things, working out intensely, so it just like helped me a lot. The fifth goal in this category is that I want to eat. So I am trying to become vegan, but I want to now shift that a bit and I want to start eating whole food plant-based food. So what it basically means is that vegan जो term है ना, it just means कि अगर आपने कोई भी चीज़ plant से ली है तो it just turns out to be vegan. If you're not harming any animal, it's vegan. But what happens, a lot of chips that we eat, a lot of junk food, a lot of food that's sort of that comes in packages, right? Packaged food जो होता है आपका basically, it's unhealthy but it's vegan. So what I want to shift that to say that I want to eat more of whole food plant-based diet. I want to have good veggies, I want to have fresh fruits, and I want to inculcate that kind of diet in my lifestyle. The second category this year is called career. Sixth goal for this year is that I want to A, get a promotion, and B, get ESOPs. Now as I said, कुछ गोल्स ऐसे हैं जो मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में. कुछ गोल्स ऐसे हैं जो थोड़े से it's just like a bit big and I just might or might not make it, but इंसान ख्वाब देख सकता है यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो हम तो कोशिश करेंगे पूरी कि हमारा प्रमोशन भी हो जाए और हमें ESOPs भी मिल जाए.
नाउ प्रमोशन, जैसे मैंने बोला कि मेरा 6 महीने पहले ही आई हैव मूव टू दिस कंपनी. सो अर्लियर एट मोबिक्विक विच वॉज माई लास्ट फर्म, आई वॉज अ मैनेजर. व्हेन आई जॉइन जेस्ट आई केम हियर एज अ सीनियर मैनेजर. तो ऑलरेडी मेरा एक प्रमोशन हो चुका है 6 महीने पहले. एक्सपेक्टिंग वो फिर से 1 साल होगा, इट्स डेफिनेटली एज आई सेड ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ है सोचने के लिए. बट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज दैट जेस्ट में जितना मैं रही हूँ, मैंने ये रियलाइज किया कि ये कंपनी एक इंडिविजुअल के करियर ग्रोथ को भी बहुत सपोर्ट करती है. आई हैव पीपल माई एज हु आर एट वेरी गुड पोजिशन डूइंग वेरी वेल. सो इफ़ यू गिव टू द कंपनी ऑलवेज गिव्स यू बैक. थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स मैं चाहूँगी कि ये साल इधर अप्रैल और अक्टूबर, बिकॉज वी हैव 2 cycles, मेरा प्रमोशन हो जाए. दैट्स वन. द सेकेंड बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट ESOPs. सो ESOPs इज बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. इट बेसिकली मीन्स कि आप कंपनी का एक परसेंटेज, मतलब कुछ परसेंटेज शेयर्स आप ओन करना चालू कर देते हो. सो इससे क्या होता है कि यू फील दैट आप कंपनी के ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड हो. सो इफ द कंपनी डज वेरी वेल, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी. इफ द कंपनी डज नॉट डू सो वेल, ऑब्वियसली आपके शेयर्स की वैल्यू कम होगी. तो जैसे कि आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हो एज एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज लाइक लेट्स से HDFC बैंक, रिलायंस और सो ऑन, वैसे ही इस कंपनी में भी आई वुड स्टार्ट ओनिंग अ परसेंटेज. और जनरली स्टार्टअप की दुनिया में आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि आपका सैलरी, आपका CTC जो है वो तो आपको मिलता ही है, बट एडिशनली यू ऑल्सो गेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कंपनी शेयर्स, ताकि आपको लगे कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो लिटरली आपकी कंपनी को बेटर करने के लिए है. यू फील मोर कनेक्टेड एंड यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द कंपनी. द 7th goal for this year is that I have talked about it a lot. One reason why I don't necessarily want to move into like a full-time content creation is because I love my job. I really like what I do. So 7th, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, लाइक एटलीस्ट 2 such projects that really make me happy, make me proud. As I said, Zest is into the BNPL world, which is called Buy Now Pay Later, जहाँ पे आप ऑनलाइन लोन्स ले सकते हैं, कंजम्पशन लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं. Without getting into too much detail, I would just say कि this is a very good space where the Indian industry is for sure. Lending का, BNPL का, digital transactions का आपने आसपास देखा होगा कि generally there is like a super growth that's happening. I want to ride that wave. I want to work on projects that are very good, that I enjoy, and do something better for the company. The next category is personal growth, which is also my personal favorite. So I consider myself कि मुझे ना अच्छा लगता है नई चीज़ें, लाइफ स्किल्स या कुछ भी नया सीखना, एंड जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन मुझे बहुत पसंद है. माई 8th goal for 2022 is that I want to read 10 books. नाउ बुक से मुझे बहुत प्यार है. अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं आपको पता होगा. आई हैव डन अ कपल ऑफ बुक रिव्यूज. आई कैन लिंक देम अप हियर. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक देम आउट. मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बुक से बहुत कुछ सीखा है. जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 9th standard में विद हैरी पॉटर, आई यूज टू लव द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर. उसके बाद मैंने बहुत सिमिलर बुक्स पढ़ी. बट देन फिर मेरा एक टाइम था जब मुझे क्राइम फिक्शन, मुझे इस तरह के क्रिमिनल नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था. सिडनी शेल्डन, डैन ब्राउन, जेफरी आर्चर इज समथिंग आई हैव एंजॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो फिक्शन एक कैटेगरी था. देन अब मुझे ऐसे लगता है कि आई वांट टू रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, बिकॉज दोज आर द बुक्स जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ. सो लास्ट ईयर भी 2021 में आई रेड 6 books. नॉट रेड लाइक सेपियंस मेरी अभी 50% बाकी है. सो आई वुड फिनिश दैट फर्स्ट. बट मैंने 5 नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी और 1 फिक्शन, और उनसे बहुत कुछ सीखा. सो दिस ईयर ऑल्सो आई वॉन्ट टू रीड लाइक 10 of them, जिसमें से मेरे हिसाब से 8 नॉन फिक्शन ही होंगी और 2 शायद फिक्शन हो सकती है. सो दैट्स द प्लान. एंड इफ आई टॉक अबाउट हाउ विल आई अचीव इट, सो जनरली एक बुक, नॉर्मल बुक में करीब 250 से 350 के बीच में पेजेस होते हैं. एंड गोइंग बाय द स्पीड आई कैन रीड लाइक अ पेज पर मिनट. सो गिवन बाय दैट लॉजिक, इफ आई रीड 10 minutes एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, आई एम प्रीटी सॉर्टेड. 9th goal, मैंने स्पेनिश का जिक्र किया, तो स्पेनिश मैंने कोर्स ले रखा है उसका. बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिस भी करती रहूँ, ताकि जितना मुझे आता है वो तो मैं रिटेन करूँ और अपनी स्किल्स को बेटर बनाओ. सो देयर इज एन ऐप कॉल्ड डुओलिंगो दैट आई यूज टू प्रैक्टिस. एंड देन देयर इज एन ऐप कॉल्ड स्लोली, जहाँ पे मैं स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में फ्रेंड्स बनाती हूँ और उनको बहुत ऐसे लंबे चौड़े लेटर्स लिखती हूँ इन स्पेनिश. सो दीज आर द 2 things दैट आई विल कंटिन्यू टू डू. अगेन डुओलिंगो में आपका स्ट्रीक का सीन होता है. सो इफ आई डू लाइक 10-15 minutes every day, I will be able to learn for like, I don't know, 100-150 hours, or maybe depends upon if 10 मिनट ज़्यादा करती हूँ. तो 2022 में मैंने 2-3 महीना प्रैक्टिस किया था, और डुओलिंगो की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि मैंने कुछ 34+ आवर्स दी हैं उस ऐप को. तो मुझे लगता है कि मैं कंसिस्टेंटली अगर 5-10 मिनट के बीच में कुछ भी करूँगी, आई विल ईजिली बी एबल टू डू लाइक 100 hours ऑफ स्पेनिश वेरी वेरी ईजिली. 10th goal, it's actually to learn cooking.
just improve my cooking skills in a way. Now I'll be very honest, मैं उन लोगों में से हूँ जिसको कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे लगता है कि it's such a slow process, it just takes so much time. So literally मैं पहले ऐसे किचन में एंटर करती थी and I used to just get annoyed with like whatever is happening. So I've never been a fan, but with time I think that's a life skill, that's a skill that everyone should have. And 2 साल हो गए मुझे घर पे, मैंने ज़्यादा I just help with the dishes and everything else, but cooking generally is something जो मम्मा करती है. But इस साल मैं सोच रही हूँ कि this is something that I would like to help her more with. My 11th goal, I want to also give a lot of my time to digital marketing. Since I am in this content creation space, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि मैं जानूँ कि actually Instagram कैसे चल रहा है, actually how is YouTube working out, how can I improve my reach, how can I make things better and stuff like that. And not just that, why not something like an email list, कि how do you have people subscribe to your newsletter. I don't know if I ever have a newsletter in future and stuff like that. How do you do Facebook ads or different kind of promotion activities. So those are the things that I want to learn this year. 12th goal for this year is that I want to build a second brain. It's a very interesting concept and a very simple concept. जितना मुझे पता है मैं वो बताती हूँ. तो basically क्या है कि over the years बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने सीखा है बुक से, पॉडकास्ट से, whatever, right? And our brain, especially मेरी मेमोरी तो बहुत ही ख़राब है. So a brain can only retain a part of it. So हम जब कुछ पढ़ते हैं, we process it and then it's like boom out of our brain, like out of sight, out of mind. So the concept of second brain basically says कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसको retain करने के लिए it's important that you sort of put it out somewhere. You have notes, digital, physical, जैसे भी आपको करना है, something that you can keep on referring to time and again, that you don't have to sort of store all those details in your brain, but rather you can use the brain space to be more creative, work on different kind of ideas that you keep on having. And I think as a concept that's pretty cool. Also, there are a lot of ideas that we keep on getting. जैसे मुझे लगता है कि अच्छा मैं इस पे YouTube बना सकती हूँ, इस पे वीडियो बना सकती हूँ. कई बार मैं लिखती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ. मैं एक बार अगर भूल गई ना, sometimes it's just gone for like days. Then I'll keep on thinking कि कुछ तो एक idea था that I could work out on, but I'm just not able to think of it. So that's why also it's very important that if you have any new idea, let's write it down. If there is something new that we're learning, not the whole of it, but the crux, whatever we've learned, any idea, any quote, whatever is good that we can refer to it again, that I would like to do. तो मेरी एक डायरी भी है. I think if you can, I don't know, it's there. एक ब्लैक कलर की मेरी डायरी है जो मैंने स्टार्ट किया था. प्रॉब्लम बस ये हो गई कि नोट्स बनाने के चक्कर में मेरे नोट्स ही ऐसे 10-20 पेजेस के बन गए. तो वो मुझे थोड़ा सा एफिशिएंट होना है उस चीज़ पे. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन आई एम रीडिंग बुक्स लाइक सेपियंस, रिच डैड पुअर डैड, कि मैं कहीं पे एक छोटा सा समरी 1-2 पेजेस का अपने लिए बना लूँ जिसको मैं बार बार रेफर कर सकूँ. द नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइनेंशियल गोल्स. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 2-3 साल पहले ना मुझे कोई बोलता कि शिवानी 2022 के गोल्स की लिस्ट में तुम्हारे पास एक सेक्शन फाइनेंशियल गोल्स के लिए होगा, मैं उसकी बात कभी भी नहीं मानती. मुझे नहीं लगता था कि मैं उन लोगों में से हूँ जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्ट्रैटेजी बनाएंगे या किसी तरह की प्लानिंग करेंगे या कोई गोल सेटिंग होगा. तो दैट वे आई एम लर्निंग एंड स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट. 13th goal for this year is that I want to invest a certain percentage. Now why do I say a certain percentage is because मैं 60% मैंने लास्ट ईयर किया था, तो मैं घर पे थी, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं था जैसे रेंट का, मेड का, ग्रोसरीज वगैरह, इट्स नॉट देयर. तो उस टाइम पे वो करना आसान था. अभी मार्च में मैं बैंगलोर मूव होने की सोच रही हूँ, तो अगर वो होगा तो ये सारे खर्चे एड ऑन हो जाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट गिवन हाउ ओमिक्रॉन इज पैनिंग आउट, हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है. हो सकता है ये पूरा साल फिर से घर पे जाए. तो इसलिए मैंने 2 चीज़ें डिसाइड की है कि अगर मैं बैंगलोर चली गई तो आई वुड लाइक टू सेव, इन्वेस्ट 40% ऑफ माई मनी. बट अगर मैं यहीं पे रही, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 60 और 70%, लाइक बिटवीन दैट नंबर. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट गोल विच इज़ द 14th one, I want to make sure I want to reach the desired split percentage. Now as I said, मैं बहुत सारी different चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ. तो मुझे लगता है कि मेरे रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं एक सर्टेन परसेंटेज स्टॉक में करना चाहती हूँ, एक सर्टेन परसेंटेज म्यूचुअल फंड में. यूएस स्टॉक्स में मुझे करने का सडनली मुझे लगा कि दैट इज ऑल्सो समथिंग आई शुड इन्वेस्ट इन. गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहिए, क्रिप्टो में थोड़ा कम करना चाहिए. तो वो सब सोच के हियर आई हैव पुट डाउन व्हाट इट करंटली इज एंड द परसेंटेज दैट आई वांट टू रीच टू. तो फॉर एग्जांपल
अभी मेरे शेयर्स में ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ माई मनी इज इन शेयर्स, विच इज़ नॉट बैड, बट अगैन अकॉर्डिंग टू माई रिस्क केपेबिलिटीज मुझे लगता है कि आई शुड कीप दैट नंबर टू अबाउट लाइक 40%. सिमिलरली यूएस स्टॉक में अभी के टाइम पे मेरे पास सिर्फ 3% मेरी इन्वेस्टमेंट है. आई थिंक आई वुड लाइक टू इंक्रीज दैट टू 10% गिवन हाउ द यूएस मार्केट, और लेट्स से द ग्लोबल मार्केट इज डूइंग, मे बी अ बिट इन UAE as well. The next category is relationships. The 15th goal for 2022 is that I will invest more in my relationships, not with just my family but also with my friends. एंड टॉकिंग अबाउट द हाउ एस्पेक्ट ऑफ इट, मैंने ये सोचा है कि 52 वीक्स अगर साल के हैं तो एवरी वीक आई विल मेक श्योर दैट आई एम गोना कॉल वन पर्सन नो मैटर व्हाट हैपेंस. मेरे साथ में थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए भी मुझे लगता है ये है क्योंकि मेरे ना बड़े सारे इंटरेस्ट है. आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव माई जॉब विच टेक्स लाइक 40-45 आवर्स ऑफ माई वीक. I have a YouTube channel which is like I want to invest in it. तो मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाती हूँ. I like to read books. There's an NGO that I work with. I like to read about different things. So मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने आप में ही बिजी रहती हूँ इतनी ज़्यादा. बट फिर मैंने वही सीखा, समझा, ये रियलाइज़ किया कि हम एट द एंड सोशल एनिमल्स हैं. हमारी सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल बुक, इट्स जापानीज बुक, इट्स कॉल्ड इकिगाई. इट टॉक्स अबाउट कि वहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पे लोगों की जनरल एज लाइक द एवरेज एज इज सो मच मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड वो कहते हैं कि बस वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वो कम्युनिटी में विश्वास रखते हैं. इसका मतलब कि हम सब अगर साथ रहें, आपस में अपना गम बांटें, खुशी बांटें, सो हमारी लाइफ पे भी वो डिपेंड करता है. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग. And so that's why it's important for me and that's what I would want to work towards in 2022. The next category is creative goals. So the goal number 16 for 2022 is that I want to upload one video per week. कहने को इतना मुश्किल नहीं लगता एक 7 दिन में एक वीडियो तो आ ही सकती है. और 2021 में जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया है, 2021 में मैंने जनवरी से जून स्टार्टिंग तक मैं गायब थी. आई वाज जस्ट बिकॉज उस टाइम पे मुझे लगा था कि शायद मैं बैंगलोर मूव हो जाऊंगी, तो मैंने कहा कि ठीक है अब टाइम अपनी फैमिली से स्पेंड करते हैं. बट अगैन सॉर्ट ऑफ लाइक कोविड केम बैक अगैन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. सो बिकॉज ऑफ दैट आई स्टेड एट होम एंड आई डिसाइडेड कि नाउ दैट आई हैव टाइम आई शुड अगैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर ऑन यूट्यूब. सो जून से लेके ऑलमोस्ट दिसंबर तक हर हफ्ते मैंने कॉन्टेंट बनाया, हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड किया. सो 2021 में मैं टोटल 24 वीडियो अपलोड की थी. तो इस साल उसको हम थोड़ा सा डबल करते हुए आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन 2022 इज आई वांट टू अपलोड 52 videos this year, which is why I said last time, I'll say it again, the space, my channel is going to have a lot of good, hopefully good content coming your way. So make sure that you subscribe to the channel and also click on the bell icon because that's why you'll know that there is a new video coming up. The 17th goal for this year is there is a reel wave which is happening on Instagram. और मुझे videos बनाना पसंद है but कभी कभी मैं YouTube में इतना busy हो जाती हूँ, मैं Instagram को एकदम ही भूल जाती हूँ. तो मुझे लगता है कि वो एक चेंज और देयर इज अ गोल दैट आई वुड लाइक टू डू. रील मैं बनाती हूँ जब मुझे मन करता है मैं बना लेती हूँ. तो मैंने 2021 में 14 रील्स बनाए हैं. इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट अगर मैं हर महीने 2 रील्स बनाऊँ आई वुड बी एबल टू push that number to 24, which I think is decent. मतलब बनाने को लोग हर दिन बना रहे हैं, but I have to be mindful of the time that I have, the energy that I have, the creative idea, so that I am just not doing it for the sake of doing, but at the same time I'm enjoying the process, and and secondly I'm also showing and sharing something which is of meaning, of or entertainment to you guys. The 18th goal for this year is quite simple and complex at the same time, but so I have YouTube setup. I have this camera, Sony ZV-1. If you want to check out the review, I'll link it up here. It's an expensive item. It's the most expensive thing I've ever bought. I bought it for like 60K if I'm not wrong. There's a ring light at the back. Then there is a mic that I'm using and stuff like that. तो मेरे अपने setup पे I would say ठीक ठाक मतलब काफ़ी कुछ in fact spend कर रखा है. So my 18th goal for this year is to one use whatever I have to its full capability, especially my camera. तो मैं generally क्या करती हूँ, मैं कैमरा switch on करती हूँ, light setup करती हूँ, I see that I'm looking okay and I start shooting videos. मैं इसके जो भी complex वगैरह like how do you I sometimes struggle with how to make a time lapse. I think that the feature does not exist, but I'm sure it's not correct. कुछ ना कुछ होगा, but मैंने वो figure out नहीं किया है. So 18A is that I have to use my apparatus in a better way so that it use to its full potential. The next category is environmental/conscious living goals. My 19th goal is to be a conscious consumer and to reduce
everything, like reduce shopping basically. So 2020 में, as I said, I did not buy any clothing. ज़रूरत नहीं थी, सब कोविड में घर पे थे. 2021 में जो मैं नई जॉब स्टार्ट की और हमने फॉर्मल मीटिंग्स में जाना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने सारे फॉर्मल्स के कपड़े रिच जो मेरी बहन है उसको दे चुकी हूँ, बिकॉज शी इज़ गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, एंड उसको वहाँ पे ज़रूरत थी, एंड देन आई हैड टू बाय लाइक न्यू पेयर. अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स ईजी. मेरे साथ थोड़ा आसान इसलिए भी है बिकॉज मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एंड देन आई हैव माई मॉम एंड देन मासी एंड एवरीवन एल्स. तो हम बहुत आराम से, हम तीनों तो स्पेशली बहुत आराम से कपड़े शेयर कर लेते हैं. तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस टू नॉट बाय एटलीस्ट द क्लोथ्स एंड देन लाइक बाय द अदर थिंग्स इफ वेरी वेरी लाइक रिक्वायर्ड दैट वे. ऑल्सो आई हैव लाइक 4 वेडिंग्स कमिंग दिस ईयर. मुझे पता है उन 4 शादियाँ, अगर कोविड is all good, doesn't go crazy, so definitely I will have to go to those weddings. I have to attend those weddings, और उसके लिए मैं शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ. मैंने बहुत सारी शादियाँ से निपटाई है. सो देयर आर 3 थिंग्स दैट आई लाइक टू डू. वन इज मिक्स एंड मैच, विच मीन्स दैट अगर मेरे पास कोई लहंगा है तो मैं ब्लाउज अलग सिलवा लेती हूँ, मैं दुपट्टे अलग सिलवा लेती हूँ और बड़ा मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ. And that sort of changes your look, to be very honest. You can try that. Second is I borrow a lot of clothes from my sisters, as I said, or my cousins, my mom, my mausi, and it just works out, right? क्योंकि शादियों वाले कपड़े तो वैसे भी आपको 1-2 बार ही पहनने, रिपीट नहीं करना है, just perfectly blends in. And तीसरा, अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो आप रेंट कर सकते हैं. There are a lot of good rent, brands that let you rent clothes for like 3-5 days and not buy. तो इन सब से like as you become more conscious and there's less impact you're putting on the environment. The 20th goal in this category, for 2022 is that I want to keep on supporting the small, vegan, cruelty-free, conscious, organic brands that are just doing their bit. बहुत सारे ऐसे brands जिनमें मैं already switch कर चुकी हूँ. There's brands like Juicy Chemistry, there's Wow, there is Dot and Key, Nykaa has also a brand. So इनमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ingredients natural या cruelty free हैं, but the packaging is also without plastic, which helps, ऐसा नहीं है कि just हम products को organic बना रहे हैं, उनके ingredients को अच्छा कर रहे हैं, but उसकी वजह से गंदगी फैल रहा है. They try to have all cardboard packaging. In fact, जब इनका सामान आता भी है तो भी it comes in like things that can go back to the earth. So I talk about them a lot on my Instagram. So if you're interested in something like that, I think you can join me up there. And there is one video that I've made recently talking about a few brands. I will link it up here. You can check it out if needed. The next category is travel. 21st goal for 2022 is that I wanted to take 2 international trips. बहुत वक्त हो गया है. लास्ट में इंटरनेशनल ट्रिप आई थिंक 2018 की है और उसके बाद से तो दुनिया ही बदल चुकी है. तो वो सोच के, वो ध्यान में रखते हुए एंड स्टिल बीइंग होपफुल, आई वुड से, मेरी एक फ्रेंड है हु इज़ इन द US, शी स्टडिंग देयर एंड शी विल बी ग्रेजुएटिंग इन मे. तो हम चाहते हैं कि हम उसके पास जाएँ, उसका कॉन्वोकेशन अटेंड करें, उसके कैंपस में घूमें, US घूमें. सो दैट्स अ विश, नॉट श्योर हाउ विल दैट पैन आउट. एंड द सेकेंड इज दैट देयर इज अ हिमालयन वीगन फेस्टिवल विच इज़ हैपनिंग इन नेपाल एज वेल एज भूटान. भूटान मेरा हमेशा से जाने का मन था. तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट. वो पहले अप्रैल में हो रहा था, नाउ इट्स बीन मूव टू September again because of COVID. तो या सिचुएशन कितनी ग्रिम हो जाएगी, कितनी प्रॉब्लम होगी, I can't say, but I can just hope. And the 22nd goal for 2022 is that I want to take 2 local trips. एंड नहीं, दिल्ली जाने को मैं ट्रिप नहीं मानती बिकॉज आई हैव फैमिली इन दिल्ली, और मुझे कहीं भी जाना तो वो दिल्ली से ही निकलता है. तो या अपार्ट फ्रॉम दैट 2 ट्रिप्स. 2021 में एक जो अमेजिंग ट्रिप मैंने हमारी थी, वाज टू अ ब्यूटिफुल विलेज कॉल्ड कुटी. आई विल लिंक द होल सीरीज अप हियर. इट्स अ लॉन्ग सीरीज एंड आई विल से इट्स माई बेस्ट वर्क टिल डेट. बहुत हमने मज़े किए, बट आई थिंक उतनी ही खूबसूरती से वो चीज़ present भी कर पाई मैं. And then I got like great views and so many lovely comments from all of you. So if you like, you can watch it. So yeah, similarly मुझे लगता है कि international trips is great, but I think similarly India में there's so much that we can see and we can explore. So मेरा एक friend है, he stays in Kerala. We are planning for a trip in April to Kerala. Not sure if that will again work out. How will things be? But that's one. And second, I'm planning something for Northeast maybe, because again that's another area that I really wanted to visit from a long time. And these were my 22 goals of 2022. I got the whole process of like thinking about them, conceptualizing them, shooting them has been super fun. I really hope you guys enjoyed it too, and I hope that this video sort of helped you in thinking about what is the kind of things that you really want to do in this new year, achieve the goal setting, and especially fixing and talking a bit about the how part as well. So ऐसा ना हो कि सिर्फ 1st January को हमने बहुत कुछ सोच लिया है और फिर 7th, 8th,
फरवरी तक तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं. रादर व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट नाउ एज आई हैव लिस्टेड दैट डाउन, आई हैव टॉक्ड अबाउट मैं कैसे करूँगी उन चीज़ों को, सो आई विल बी ट्रैकिंग दैम डाउन एज वेल. इफ दैट इज समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, इफ यू वांट टू नो कि मैं कैसे ट्रैक कर रही हूँ ऑन अ डेली, वीकली, मंथली बेसिस, डू लेट मी know in the comments below. I would love to make a video on that as well. And I really again wish you all a very, very happy new year. I hope that this year is an amazing one for you, and that all of you get everything that you want, that you work hard, that you work on your dreams, never give up on them, and make a life that you really, really deserve. And yeah, you guys know the drill. If you like this video, give it a thumbs up, let me know in the comments below whatever you think of it, and I will be back soon, really, really soon, with another video. Oh, also don't forget to subscribe to my channel, click on the bell icon, because उसी से आपको पता चलेगा जब मेरी अगली videos आएंगी, and you will be able to watch them. And yes, I will see you super soon. Until then, do whatever makes you happy. Bye bye.